Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 7th of April. The first topic is India-US joint efforts in fighting climate change. Second, IMF projection on India growth outlook. Third, WHO chief scientist caution against the full lockdown that the government is planning to impose. Actually, this is not official confirmation. All the rumors are being spreading. Government is more looking into some strict action, not the complete lockdown. The second last is reworking net zero for the climate justice. And the last is talk begin to revive Iran nuclear deal. Right? So these are some of the important article, news and editorial from today's newspaper. Apart from this, we will discuss some MCQs question at the end of this session. So this question pertains to current affair and that is definitely going to benefit you in the upcoming prelims examination. And before I proceed with the discussion of the news, announcement that whatever news editorial was there for the entire 6 months, that is from August 2020 to January 2021, we have compiled that for you so that you can excel in CSE 2021, right? So this is a quick revision for all the editorial from August 20 to January 2021. And this will simplify your editorial concepts because we know UPSC tend to ask editorial, lots of questions and lot of concept that is involved in the current affair question directly come from the editorial newspaper. So at the same time, you would be also getting 200 plus MCQs question in this module. Basically, this is a free PDF that you can avail through Apti Plus site. You can log into the site or you can refer to the ISGAN site as well, right? So do check it out. This is the most important part, as compilation for the past 6 months. That is definitely going to help you. This is the compilation. The sources are from Hindu, Indian Express and PIB. So do check it out and get benefit out of it. Now coming to the first news, that is India-US joint efforts in fighting the climate change. So India and US as an ally, talking about India and US efforts, India has always been looking forward for the action that could be taken to ensure that climate change is properly maintained across the globe. So this is important for your general studies paper 2, bilateral and regional grouping and agreement evolving India's and India's interest. So India and US have identified tackling the threat of climate change, जहाँ पे दोनों कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है. Climate change has become priority for both two countries. And if you talk precisely about United States, they have a respective shared interest on making the climate change cooperative as a central pillar of strategic partnership. Because we know the previous president of Donald Trump, he has refused to continue with the Paris climate change, जो PC है Paris climate change, उसके साथ अध्ययन करने को मना कर दिया था. एंड द न्यू प्रेसिडेंटशिप दैट इज जॉय बिडेन, ही हैज recommitted that definitely he would be looking with the जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसके क्लॉजेस को और जो एग्रीमेंट है उसको फाइनल करेंगे ताकि 2030 तक जो क्लाइमेट रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं हर कंट्रीज के उनको पूरा किया जा सके. Now, a special presidential envoy for the climate, the new presidentship of Joe Biden has assigned a dedicated person. He is John Kerry. You must be aware of him. If you do not know about John Kerry, you can refer to the Wikipedia. So, John Kerry is an United States Special Representative envoy. और ये climate change के लिए इंडिया में आए हुए हैं. He's on a 4-day visit because of which the news has appeared. And he said that the US is committed to bring emission below 1.5 degrees Celsius, right? So this was the commitment 1.5 to 2.5, which is there the commitment of Paris climate change, right? PCC. Now he also said that the red hot investment opportunity is again very important because the world is looking for clean energy shift. And clean energy, we mean renewable energy, right? Renewable energy is something that is meant by the clean energy. And it is still not clear that whether he will make an announcement restoring the funding that Donald Trump administration has cancelled. So if you talk about precisely the previous president, that is Donald Trump, he was not on the arena, he was not on the notion that he was looking forward to continue with the all multilateral organism, चाहे वो WHO की बात करें या फिर Paris climate changes की बात करें. So
he was not a man that he continued with this all these things, but the new presidentship of Joe Biden is looking forward कि जितने भी multilateral forums हैं उसमें जो commitment होनी चाहिए यूएस की उसको लिए यूएस ऑब्लाइज्ड है। और इंडिया की अगर कमिटमेंट की बात करें तो वी हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद यूएस एज वेल, एंड दिस प्रेसिडेंटशिप ऑफ जो बिडेन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इंडिया अ लॉट in terms of bilateral relationship. Now, agreement and goals, what are the agreement that were assigned? So if you talk about the advanced climate and Paris climate agreement, so कुछ important चीज़ों की बात की गई है जैसे कि decarbonization strategy. India clean energy transition would be again very critical, and India has its own INDC जो हमारे intended national determined contribution है उसके लिए India inclined है, and India is committed to that as well. But India is also looking forward for a technology, financing, support aggressive domestic economies and energy transformation. और अगर advance geostrategic interest की अगर बात करें, so a strengthened climate partnership would also be there that would advance both India and United States to respective state geostrategic interest, right? So these are some of the important agreements and goals that both India and United States is looking forward to overcome the challenge of climate change. Now, the other news, that is IMF projection on India growth outlook. So, despite the fact that the COVID-19 has severely impacted the economy, impacting all the important sectors like manufacturing, now there's a projection coming from IMF, that is India International Monetary Fund, राइट IMF. आप IMF के बारे में भी पढ़ ले, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये कौन कौन से इंडेक्स को रिलीज करती है, राइट. मेक श्योर यू नो ऑल द इंडेक्स दैट इज बीइंग रिलीज एंड द रिपोर्ट दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय IMF. दिस बिकम वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Now let's see what is the news coming from this particular section. This is important for your General Studies Paper 3 and Inclusive Growth and Issues arising from it. So IMF has projected that India is about to grow by 12.5% in the current fiscal year. So this is for 2021-2022, right? So the projection has been made by IMF, but India faces significant downside risk because of the ongoing COVID-19 viruses. It was being projected, but जिस तरह से cases surge कर रही है इंडिया में, that is, you can see the cases are again on the surge and the downfall has not been seen yet. So cases surge होने की वजह से projections में भी changes होंगे. Now the IMF chief economist है Geeta Gopinath, she is again an Indian. She said that the projection for the India were based on the evidence to support the normalization of economic activities, because what government has did, they have Atmanirbhar Bharat packages upon which every sector was focused, and this focus has helped economy to recover. Definitely it will take a longer run, because जो पूरे एक साल की जो ऑलमोस्ट लॉकडाउन हुई है उसको रिकवर करने में कंट्री को फिर से 1 to 1.5 ईयर लगेंगे, राइट. सो दिस इज अगेन डेफिनेटली द इकोनॉमी इज गोइंग टू रिफॉर्म, बिकॉज अगर आप FDI की बात करें, सो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अगेन वेरी हाई कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो, और बहुत अच्छे से FDI की इनफ्लो देखी गई है. सो दीज आर सम ऑफ द सिंबल विच शोज की इकोनॉमी रिकवर कर रही है. Now, recovery of the global economy, the projection was also made by the IMF, ki what would be the global recovery. So IMF, the International Monetary Fund, has said कि जो expected growth है that is the rebound to be 6% के आसपास पूरी global economy rebound कर सकती है, but जो estimation contraction थी for calendar 2020 was 3.3%, and before it was 4.4% for 2022. Now, the projection was also made for 2021, which was slightly higher due to the physical support and large economy support which was been given. वैक्सीन सपोर्ट रिकवरी है उसको लेकर के भी बहुत सारे एलोकेशंस दिए गए हैं. गवर्नमेंट ने भी इंडिया में डेडिकेटली इस बार बजट में अनाउंस किए हैं. इफ़ यू नो द अमाउंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि बजट में कितने पैसे सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के लिए डेडिकेटेड अलोकेट किए गए. Now, US GDP की अगर बात करें, this forecast higher than the non-pandemic scenario, because US is an economy that is almost $20 trillion economy, so they would be moving forward, and the other economy is expected to rebound, but at the slower rate. This is what the IMF has to quote.
Now अगर यूरो एरियाज की बात करें, सो द प्रोजेक्शन इज अराउंड 4.4%, 3.8% इन सिंपल पीरियड, और चाइना की ऑलमोस्ट 8.4 to 5.6%. Now the average annual loss की बात करें जीडीपी में, this is for the relative period. So this was expected to be around 5.7 for the low and middle income countries, और जो emerging market है वहाँ पे percentage 4.7 है. So this section is more data driven. आपको कोई भी डेटा याद नहीं रखना, बट आपको ये जस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या चीजें इंक्रीज हो रही है और क्या चीजें डिक्रीज हो रही है. Now for the advanced economy, this number is lower point, and the projection has been made for 2.3%, right? So this is a trend that is going for the recovery of global economy and as projected by the IMF, that is International Monetary Fund. Now the other news from Indian Express, WHO chief scientist cautioned against the full lockdown, right? So Soumya Swaminathan is a chief scientist at WHO. She is an Indian origin, and she said that जो लॉकडाउन है इंडिया में अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो उसके रिपरकशन बहुत ही ज्यादा हाई होंगे, बिकॉज इकोनॉमी हैज स्टिल नॉट रिकवर एंड इट इज बैटलिंग टू रिकवर, राइट? So this is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. Now talking about the content of this news, so it said that जो World Health Organization की जो chief scientist है Soumya Gopinath, and she says like the full lockdown that is going to be there, right? And she said that the consequences of lockdown are terrible, right? So if you talk about the expert scientists like Soumya Swaminathan, they are the expert people. they अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें इंडिया में तो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उसी तरह से Soumya Swaminathan, they are the expert. So their views are being taken by the government and they consider it. तो उनके बातों पे गवर्नमेंट तवज्जो देती है, they take importance of them. And she has also said कि जो citizen है and government have to manage the second wave, right? And we cannot assume कि third wave होगा नहीं होगा, but we have to counter the second wave at this point of time only, right? So vaccinated need to be increased, more and more vaccination centers should be there, and countries should not wait for the third wave. They should not strategically plan for the third wave. अभी सिर्फ और सिर्फ हमें second wave पे focus करनी है, क्या पता third wave आई ना, right? So these are some of the things that she suggested on the part to the government. Now gaps in the doses in the vaccine. So the expert opinion coming from the WHO said जो पहले वैक्सीन के बीच में जो डिफरेंस रखी गई थी 4 से 6 वीक्स की, अब इस डिफरेंस को बढ़ा करके बोला गया है कि आप वैक्सीन के डिफरेंस को एक डोज से दूसरे डोज में 8 से 12 वीक की कर दे. फॉर द फर्स्ट डोज एंड द सेकेंड डोज द डिफरेंस शुड कंटिन्यू बिटवीन 8 to 12 वीक, राइट? दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड, and this is specifically for the Covishield vaccines. And vaccination is not recommended for the children. अभी बोला गया है कि ऐसे बच्चे जो हैं उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट ना की जाए, बिकॉज द गैप इन द 2 doses stretches to 8 to 12 weeks. और अभी बिकॉज चाइल्ड की जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो काफी हाई होती है कंपेयर टू अडल्ट एंड ओल्ड एजेस. सो द एक्सपर्ट ओपिनियन कमिंग फ्रॉम WHO दैट चाइल्ड शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड एज ऑफ नाउ. Now, vaccination coverage in India, if you see how many vaccination and how many people are being covered every day, so India is administering 26 lakh doses of vaccine on daily basis, right? So we are only second to United States, which is like focusing on 30 lakh doses per day, right? We can chase this target, we have a potential, but definitely infrastructure bottleneck होने की वजह से इस टारगेट को चेज करने में थोड़ा मुश्किल है, बट वी कैन मेक श्योर कि हमें 35 तक भी जा सकते हैं. इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है. Now the COVID-19 variant has led large infectivity and people hence the more are panicking. See, panic is something which has no solutions, but adequate resolution to the problem is required. We as an individual need to be patient. We need to be taking all the cautions and mandatory measures that government of India has provided to us. Now the government has to take some steps to restrict the COVID-19 spread, and जो pressures है private hospitals में उसको कम करने की जरूरत है. And at the same time it is important कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, बनाया जाए, ताकि उन लोगों को भी वैक्सीनेशंस में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट मेनी स्मॉल हॉस्पिटल दैट आर बिकमिंग द वैक्सीनेशन सेंटर, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट as many as number of private hospital that can come into this.
Now, reworking net zero for the climate justice, because climate justice is something which is very important, and India, in the beginning only we have discussed किस तरह से US भी committed है climate change को लेकर के. So we'll discuss this editorial. This is in the Hindu, and this can be important for the General Studies Paper 3, Conservation of Environment, Pollution, Degradation, Environmental Impact Assessment, right? Now, if you talk about the global transformation that is taking place in planet, we cannot deny this. और इसके वजह से ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रही है. अगर हम 1981 के बाद से बात करें या पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात करें, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, सो अर्बनाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से द पोल्यूशन लेवल हैज ग्रेजुअली इंक्रीज. तो पैरेलली दोनों चीजें चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. नाउ अगर बात करें यूएन जनरल असेंबली की, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया था 2015 में एसडीजी के गोल्स को, और इसके जो टारगेट रखे गए हैं दैट इज फॉर 2030 टू अचीव ऑल द एसडीजी गोल्स, राइट. नाउ इफ यू टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रेफर किया कि वी वुड बी एडहरिंग टू द क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसको एडहर करेंगे, और जो अपने इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है उसको भी अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे. नाउ India meets its Paris climate change target by 2030. Its per capita emissions जो है थर्ड इन द वर्ल्ड ग्लोबल एवरेजेस, और जो फ्यूचर में जो चीजें इंडिया को कंट्रीब्यूट करनी है इकोलॉजिकल स्पेसेस में, सो आई पर्सनली फील इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एंड दे कैन अचीव दिस टारगेट वेरी सून. नाउ ट्रीटी इनइक्विटी की बात करें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, उसके कुछ 3 बातों में आपके साथ बताऊंगा. फर्स्ट इज इनइक्विटी टू बिल्ड इनटू द क्लाइमेट ट्रीटी. If you talk about the annual emissions, right? So basically India 4th largest emitter है world में. There are other countries like United States and China, they are contributing a lot. तो India के जो contribution है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है. वहीं पे United States की जो contribution है that is 26% and China contribute 13%. You can see that the contribution of pollution to India is very less. India contributing very less, but जो बड़े countries है वो बहुत ही ज़्यादा contribute कर रहे हैं और उनकी commitment बहुत low है, right? जिस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंटशिप होती यहाँ पे और 26% कंट्रीब्यूट करने के पॉल्यूशन के अलावा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है उस पर सिग्नेटरी ना रहना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खास करके एक बहुत ही सेटबैक डिसीजन होती यूनाइटेड स्टेट्स के लिए. नाउ सेकंड इज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एंड क्लाइमेट. अगर यहाँ पे बात करें स्ट्रैटेजी जो तरीके से अचीव करने की जरूरत है, सो डेफिनेटली वी नॉट नीड टू ओनली फोकसिंग अपॉन सिम्टम्स, हमें उस पर काम करने की जरूरत है. जो डेवलपिंग कंट्रीज है दैट शुड डिस्कस कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन अचीव इट. नाउ द थर्ड मॉडल इज द ग्लोबल पॉलिसी. डेफिनेटली एक रीजनेबल तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना कि कंपेरेबल लेवल पे वेलबींग किस तरह से इम्पार्ट किया जा सके, राइट. सो दिस पॉइंट मीन टू से दैट the recommendations for the developing countries are based on the consideration achieving reasonable not comparable level of well-being. So एक reasonable restrictions होनी चाहिए, ये नहीं कि comparable हो, we are trying their effort, but reasonable restrictions would be imposed. Now different means to achieve the goal is also there, ताकि पूरे वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी आ सके. जो एक एंडेवर है प्लैनेट को सेव करने की, दैट शुड बी देयर, एंड द बिहेवियर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में अगर बात करें, इकोनॉमिक सर्वे ने बिहेवियर चेंज के बारे में भी बात की थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग इन मेंस पेपर. मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस पॉइंट्स. Now role of infrastructure is again very important. Infrastructure define करती है human के well-being को, because services it provide make it different. Manufacturing, lifestyle, ये सारी चीजें भी role of infrastructure में आती हैं. And for developed countries, peaking of emissions come some 20 years after the infrastructure saturation take place. तो जो नेट जीरो एमिशंस की टारगेट है उसके लिए 2 डिके काफी होंगे. स्टिल वी आर इन 2021, सो द टारगेट फॉर एसडीजी गोल इज 2030. सो वी हैव टू इंश्योर कि इस टारगेट को इंडिया पूरी तरह से अचीव कर ले बाय 2030 थ्रू द एडवांस ऑफ एजिंग, पॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी. Now coal use is something which is again very significant, contributing a lot. So coal account for the quarter of global energy uses. और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया हैज abundant reserve of coal compared to the other developed countries, and India is gradually moving towards renewable energy. और जो हाइड्रोजन फ्यूल है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी है.
कोल की लेस यूज करने की बात की गई है और रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन जैसे फ्यूल्स की जो इलेक्ट्रिफिकेशन में भी यूज किया जा सके. सो गवर्नमेंट हैज कमिटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज ऑल द अल्टरनेटिव सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द कोल. Now, new framework is also there. So the global goal shaping its strategy is required. तो इंडिया के पास जो अपनी यूनिक जो सर्कमस्टांसेस है उस रिस्पेक्ट में फूड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड हैव अ चेंज. एंड फॉर कंप्लीट अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर आप मीट कंट्रीब्यूशन की बात करें, द कंजप्शन ऑफ मीट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इमिशन, राइट. दिस इज अ थर्ड टू द ग्लोबल इमिशन. एंड इंडियन ईट्स ओनली 4 kg of wheat compared to 68 kg of wheat that is being occupied, that is being taken, that is being eaten by European Union, right. तो आप देख सकते हो this is twice where the US is the third on the food wastage of household. तो food की wastage भी ग्लोबल इमिशन में कंट्रीब्यूट करती है. दीज आर द फैक्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाएंगे तो ये फैक्टर पूछे जाएंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर. तो मेक श्योर आप यहाँ की जो एनालिसिस है उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट. सो इंडिया में जो कंजप्शन है मीट की वो 4 kg है पर इंडिविजुअल के लिए फॉर एन ईयर, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज में 68 kg पर ईयर है, right. Now the transport emission account for the quarter of global emission. The fastest growing emission worldwide surpassed the emission of electricity, but not on the global agenda. So definitely everything need to be taken into the consideration, and all country, being the developed or the developing countries, need to put their effort so that they can overcome the challenge of climate change. Now talks began to revive Iran nuclear deal. Like this is also a troublesome for the country because after the removal of US troops from the Iran and Afghanistan, now how the things would take place. और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है. अफगानिस्तान की इशूज वो अलग से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं डेली न्यूज एनालिसिस में. इफ यू नॉट वॉच इट, डू चेक इट आउट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 bilateral regional grouping and agreements. सो ईरान के जो वर्ल्ड लीडर है वो अभी फ्रेशली दे वांट टू मीट विद ऑल द ग्लोबल लीडर्स स्पेशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू नेगोशिएट द ऑब्लिगेशंस जो इनडायरेक्ट टॉक्स है जो 2015 में न्यूक्लियर डील को लेकर के बातें की गई थी उस पे क्या प्रोस्पेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की, ये क्लियर करने की बात कही गई है. एंड 2015 की जो डील थी उसने कुछ सैंक्शंस को हटाए थे इन रिटर्न फॉर द कर्ब्स. जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट लाई थी, प्रोडक्शंस में कमी की थी. तो जो सैंक्शंस थे उसको वापस से हटा लिए गए थे यूएस की तरफ से, राइट. नाउ यूएस की एफर्ट्स क्या है ईरान में, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रॉमिस्ड कि दे वुड रीजॉइन द न्यूक्लियर डील और ईरान की जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसको अदर करने की ज़रूरत है. So this was signed in 2015 by the former President Donald Trump, who has withdrawn in 2018, right? 2018 को उसको withdraw कर लिया गया था. Now the maximum pressure campaign devastating Iran economy जो कि failed हुई थी. ईरान की अगर बात करें negotiation की तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई है सीरिया, लेबनान जैसे एरिया में. एंड दीज कंट्रीज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क. मेक श्योर आप इसको मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें क्योंकि अगर कोई चीज़ें न्यूज़ में ही है तो वो रेलिवेंट हो जाती है आपके मैप वर्क के लिए भी, राइट. और जो नई प्रेसिडेंटशिप है जॉय बाइडेन की, उन्होंने रिटरेट किया है, उन्होंने दोहराया है इस चीज को कि दे वुड बी रिटर्निंग टू द JCPOA, that is Joint Comprehensive Plan of Action, that provided Iran return to the full compliances. तो ईरान से full compliances की बात की गई है और यूएस वापस से उस एग्रीमेंट पे रिटर्न करेगा. So the return of US to the JCPOA may be a positive steps. Globally इसको एक positive steps देखा जा रहा है, but however there may be many challenges to the US and Iran to return to the negotiation table. So this is not a cakewalk for US and neither for the Iran. Definitely they would have some troublesome in overcoming this problem. Now coming to the MCQs question of the day. The first question that we're discussing is from Mission Vaccination. The mission is aimed at reducing the infant mortality. Under this mission, a national human milk bank and lactation counseling center was established. So आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, A, B, C और D. Whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section down below. Now the second question is from the Defense Acquisition Council. This was there in the news for a lot many times.
So the Prime Minister of India is the chairman of the council. It was framed after the group of ministerial recommendation on reforming the national security system in 2001 post-Kargil war. So again, some of the important point has been taken considering the fact that the upcoming prelims examination is near. So you need to just learn some important analysis question which is there in the current affairs section. So do participate, write your answer in the comment section down below. आपको आंसर लिखने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और वहां पे अपने करेक्ट आंसर को नोट करना है. So do participate, write your answer there. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.